Let's see chapter 7, the last leaf. This is a story of two girls, Sue and Johnsy. Two young artists shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. This is the story when it starts. Means Sue और Johnsy नाम की दो फ्रेंड थी. You can say the bosom friend even also, जिसे जिगरी दोस्त कहा जाता है. वो दोनों यंग आर्टिस्ट थे और वो लोग एक थर्ड स्टोरी पे यानी 3 मल्ले पे एक रूम था जिसे वो लोग भाड़े पे ले रखा था. Johnsy fell very seriously ill in November. What happened? तो जनवरी में नवंबर में अचानक जॉन्सी बीमार पड़ जाती है एंड सी हैड निमोनिया. उसे क्या होता है? निमोनिया हो जाता है. सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, एज बिकॉज सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. So that's why she was not doing anything at all, only watching outside of the window. And watching what? Sue, her friend, became very worried. She went for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. So what happened? The Johnsy was suffering from pneumonia, and as there was no any progress because Johnsy was continuously watching outside the window and thinking something else. The doctor, although the Sue who was her friend, so she went to the doctor and asked the question even also. Doctor came regularly, investigated everything, but there was no any progress in her health. उसके हेल्थ में किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं था. So one day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" अचानक एक दिन डॉक्टर ने देखा कि इतनी सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है. तो वो पूछ दिया कि क्या जॉन्सी जो है कुछ किसी चीज को लेके सोच रही है, वोरिंग कर रही है, चिंता कर रही है. नो, रिप्लाइड Sue. बट व्हाई डू यू आस्क? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं? डॉक्टर सेड, Johnsy it seems has made up her mind that she is not going to get well if she does not want to leave. Medicines will not help her. Doctor said that the Johnsy is thinking something else, and it is said that if a patient does not wish to be repaired, to be cured, no medicine will work. अगर कोई पेशेंट खुद ही ठान ले कि मुझे ठीक ही नहीं होना है तो उसे दुनिया का कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है. तो शायद यही कहानी जो है वो जॉन्सी के साथ भी है. She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about the clothes and fashion. अब she was a very good friend, so that's why she decided to do a lot. उसने बहुत कोशिश की कि इसका ध्यान जो था वो अलग चीजों पे कंसंट्रेशन से तोड़े और ये सोचना शुरू कर दे बाकी चीजों के ऊपर, फैशन, सॉन्ग, ऐसी चीजों के बारे में बात की. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट देयर वाज नो इंटरेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द जॉन्सी. And Johnsy continued to lie still on her bed, and she brought her drawing board into the Johnsy room and she started painting. So when Sue knew that the Johnsy was not giving any kind of interest in talking or maybe fashion or singing anything else, so she brought, वो एक पेंटर थी तो इसलिए उसने अपनी पेंटिंग को उसके रूम में ला करके रख दिया और सोचा कि चलो इसके सामने रहूंगी तो शायद इसका ध्यान पेंटिंग की तरफ होगा. So that's why her drawing board into the Johnsy room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब उसके दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए पेंटिंग करते करते वो विजिल भी बजाया करती थी. Suddenly she heard Johnsy whisper something. अचानक उसने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना, बहुत ही लो वॉइस में कुछ आवाज सुनी. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall and opposite their window. What is happening here? When she started whispering, she went nearby and thought that what she wants to say. तो वो क्या कहना चाह रही है कि वो उससे पूछने की कोशिश करे. बट शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड लाइक 12, 11, 10, 9, 8, 7. So she thought that she was watching outside of the window towards the ivy creeper. Ivy creeper means
creeper plant. You might have seen the creeper plant, which creep and just rest near on the wall even also, जो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं. तो उसने देखा कि एक आइवी क्रीपर है जो दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ है, हाफ चढ़ा हुआ है, और वो उसे काउंट कर रही है. तो उसने सोचा इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, and there was a strong wind which was blowing outside of the room. So wind, due to the strong wind, the leaves were falling. तो इसके वजह से पत्ते जो थे वो गिर रहे थे. Leaves were falling and the creeper was shedding its leaves. So the creeper plant was shedding its leaves. What is it, dear? She asked. उसने कहा कि ये क्या है, ये क्या कर रही हो? 6 whispered Johnsy. तभी जॉन्सी ने कहा कि 6. They were falling faster now. देखो अब ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. देखो 3 दिन पहले इसमें 100 से ज्यादा पत्ते थे. There are only 5 left now. और अब देखो कितने बचे, मात्र 5 ही बचे हुए हैं. So it is autumn, said शिव. शिव ने कहा इसमें इतनी ज्यादा चिंता करने की बात क्या है. It is the season of autumn and in the autumn season leaves fall. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with the finality. So Johnsy had made up her mind that when the last leaf of this creeper plant will fall, then on that particular day I will be dead. मैं उस दिन मर जाऊंगी. So I will die. That was her finality. I have known this for the last 3 days. मैं इन दोनों चीजों को पिछले 3 दिनों से मैं ये जान चुकी हूं कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगा मेरी मौत हो जाएगी और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी.